10 is the highest score possible in Olympic competition. In blackjack, the 10, jack, queen and king are all worth 10 points. In basketball, 10 feet is the height of the basket, the pinnacle of scoring. In soccer, Pelé and Maradona, the greatest legends of the game, wore 10 on their jersey. 10 is the index for measuring all excellence. 10 is also the number of years in which one of the finest turnaround stories of Indian industry happened. The story of Peerless. Peerless among finance companies. But the actual story of Peerless began in 1932, almost 8 decades ago, in Narayanganj, in undivided Bengal, with a startup capital of rupees 300. Radhasham Roy was a school teacher, but he had a dream. A dream fired by the belief that Indian institutions were required to invest Indian savings. A dream later taken ahead by his eldest son, B.K. Roy. From its tiny beginnings grew an extraordinary company, a peerless company. In the mid-90s, D.N. Ghosh became chairman of Peerless. Around the same time, in a new thrust towards professionalism, Sunil Kanti Roy, younger brother of B.K. Roy, took over as managing director. In the past 10 years, Peerless has grown, not only in size, but also in brand, reach, stature. It grew its branches, strengthened its network of field offices, increased its collections, enlarged its customer base, and honed its efficiencies. In 2006, Dipankar Basu became chairman. Peerless has shown resilience, fortitude and willingness to change. This is a company that is ready to take on tomorrow. Under S.K. Roy's leadership, Peerless has grown exponentially, diversified into exciting new businesses, met the challenges of an emerging India, and is now all set to offer millions of investors across India new financial solutions. The amazing turnaround at Peerless over the past decade would not have been possible without the leadership of Mr. S.K. Roy. In the past 10 years, Peerless has grown 22% in profit. Its reserves have grown 45%. Today, the company's net worth is over 120 billion rupees. Its capital adequacy ratio is 135%. About 50 million depositors, 40 million of whom have already been paid back on time. Rupees 180 billion maturity payments made. 5,000 employees today operate out of 158 offices all over India. Its smart guides number over 100,000. What began as a savings company distributing its own products, diversified into hospitals and healthcare, hotels and hospitality, housing and realty, securities and financial products distribution. It has now launched mutual funds and is all set to enter other financial products that can offer its customers seamless financial solutions. In short, Peerless is today a financial supermarket. At the heart of this turnaround were improved cost efficiencies, IT connectivity, a pan-India network, more people, more branches, more professionalism, which began with the restructuring of the board itself. But it did not stop there. Brand Peerless is constantly challenging its own past, redefining itself to stay ahead in one of the fastest growing businesses, the business of money. At Peerless,
We have gone through enormous changes in our product mix, in our work systems, and in our structure. But we have maintained our inherent strengths, our distribution system, our people, and the trust of our customers. At the heart of it all is trust and integrity, hallmarks of a successful company built up over almost 8 decades, spanning 3 generations of the Roy family. Young Jayanto Roy has now joined his father, Sunil Kanti. The man who turned Peerless around into such an amazing success story and received the Padma Shri for his efforts. Never before has a father and son headed 2 distinguished chambers of commerce as president at the same time. Sunil Kanti presides over the Bengal National Chamber of Commerce and Industry, Eastern India's oldest and most distinguished chamber. Jayanta, at 34, presides over the Indian Chamber of Commerce. Trust, continuity, constant, relentless innovation, and the enshrining of family values. The story of Peerless continues at a challenging pace. We did it. Peerless, where tradition meets tomorrow. ओलंपिक प्रतियोगिताओं में 10 से ऊंचा स्कोर संभव नहीं है। ब्लैक जैक में 10, गुलाम, बेगम और बादशाह गेम के सबसे ऊंचे पत्ते 10 अंक के होते हैं। बास्केटबॉल में स्कोरिंग का शिखर, नेट की ऊंचाई 10 फीट होती है। फुटबॉल के सबसे मशहूर खिलाड़ी पेले और मैराडोना दोनों 10 नंबर की कमीज पहनते थे। 10 उत्तमता मापने का सूचकांक है। 10 वो नंबर भी है जितने सालों में भारतीय उद्योग के इतिहास में नवजागरण की सबसे बेहतरीन कहानी घटी। पीएलएस की कहानी वित्तीय कंपनियों के बीच अद्वितीय। लेकिन पीएलएस की वास्तविक कहानी 1932 में शुरू हुई, लगभग 8 दशक पहले, अविभाजित बंगाल के नारायणगंज में 300 रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ। राधाश्याम रॉय एक शिक्षक थे, लेकिन उनका एक सपना था, इस धारणा पे आधारित कि भारतवासियों की जमा पूंजी की बचत के लिए भारतीय संस्थानों की जरूरत थी। वही सपना जिसको फिर उनके बेटे बीके रॉय ने बढ़ावा दिया। एक मामूली सी शुरुआत से एक बेमिसाल कंपनी बनी, एक पीएलएस कंपनी। 90 के दशक के बीच में डीएन घोष पीएलएस के अध्यक्ष बने। करीब उसी दौरान व्यावसायिकता की ओर एक नया कदम बढ़ाते हुए बीके रॉय के छोटे भाई एसके रॉय ने प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया। पिछले 10 सालों में पीएलएस बढ़ी है, न सिर्फ विस्तार में बल्कि अपनी छाप, पहुंच और प्रतिष्ठा में भी। अपनी शाखाएं बढ़ाई, क्षेत्र अधिकारियों का संघ मजबूत किया, अपना संग्रह बढ़ाया, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की, अपनी क्षमता को और सुधारा। 2006 में दीपांकर बासु अध्यक्ष बने। Peerless has shown resilience, fortitude and willingness to change. This is a company that is ready to take on tomorrow. एसके रॉय के नेतृत्व में पीएलएस अविश्वसनीय रूप से बढ़ी है, रोमांचक नए व्यवसायों में फैली है,
उभरते भारत की चुनौतियों का सामना किया है और अब भारत के लाखों निवेशकों को नए नए वित्तीय समाधान पेश करने के लिए तैयार है। The amazing turnaround at Peerless over the past decade would not have been possible without the leadership of Mr. S.K. Roy. पिछले 10 सालों में पियरलेस के लाभ में 22% बढ़ोतरी हुई है। इसके भंडार में 45% वृद्धि हुई है। कंपनी का निवल मूल्य आज 121.4 अरब रुपए है और उसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 135% है। लगभग 5 करोड़ जमाकर्ता, जिनमें से 4 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान समय पर हो चुका है। 180 अरब रुपए परिपक्वता में भुगतान किए गए। 5000 कामगार भारत में फैले हुए 158 ऑफिसों में काम करते हैं और उसकी स्मार्ट गाइडों की संख्या 1 लाख है। अपने खुद के उत्पादों का वितरण करने वाली एक बचत कंपनी से शुरू होकर पियरलेस हेल्थ केयर और अस्पताल, आवास और होटल्स, प्रतिभूतियां और वित्तीय उत्पादों के व्यवसाय में भी शामिल हो गई। अब उसने म्यूचुअल फंड्स का प्रारंभ किया है और जल्द ही अन्य वित्तीय उत्पादों की भी शुरुआत करेगी, जिससे उनके निवेशकों को सहज वित्तीय समाधान मिलेंगे। संक्षेप में, यह आज एक वित्तीय सुपरमार्केट है। इस पूरे बदलाव की वजह थी लागत कुशलता में सुधार, आईटी कनेक्टिविटी, एक अखिल भारतीय नेटवर्क, ज्यादा लोग, ज्यादा शाखाएं और बेहतर व्यावसायिकता, जो स्वयं बोर्ड के पुनर्गठन के साथ आई। लेकिन बात वहां रुकी नहीं। पियरलेस अपनी बीती सफलताओं को हमेशा चुनौती देते हुए ये खुद को बदलती रहती है, हमेशा आगे रहने के लिए। इस तेजी से बढ़ते व्यापार में पैसों का व्यापार। At Peerless, we have gone through enormous changes in our product mix, in our work systems, and in our structure. But we have maintained our inherent strengths, our distribution system, our people, and the trust of our customers. बस विश्वास और ईमानदारी की नींव है एक सफल कंपनी की पहचान। लगभग 8 दशकों में बनाई गई, जिसमें रॉय परिवार की 3 पीढ़ियां शामिल हैं। अब कुमार जयंतो रॉय अपने पिता एस.के. रॉय का साथ दे रहे हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने पियरलेस की काया पलटी और उसे सफलता की मिसाल बनाई, उन्हें अपने इस प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पिता और एक बेटा एक ही समय में 2 प्रतिष्ठित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं। एस.के. रॉय पूर्वी भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित बंगाल नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। 34 वर्षीय जयंतो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। विश्वास, निरंतरता, लगातार सतत नवाचार और पारिवारिक मूल्यों का पालन। पियरलेस की कहानी अभी भी चुनौतीपूर्ण गति से जारी है। We did it. पियरलेस, परंपरा और परिवर्तन का मेल।